fast, come fast. और हर भाषा का wind up in 5 minutes. और हर भाषा को भाषा करिएगा. और हर भाषा करिएगा. किस भाषा करिएगा? बिना किस भाषा करिएगा. और भाषा करिएगा. हर भाषा करिएगा. किस भाषा करिएगा. और हर भाषा करिएगा. किस भाषा करिएगा. The Lord knows you and the Lord honors you. English? Understand English? The Lord knows you and the Lord honors your faith. There is some emptiness I see in your life and the Lord is filling it. Amen. I see an empty vessel and I see water being poured into the vessel. The meaning is there's something empty in your life and the Lord is filling it. Amen. That's why you're receive it with faith. We prophets are prophesying over your life. There's an increase happening in your life. Some confusion in your family is leaving you. There are not so good people around you. And the Lord is in control of the situation. The Lord highlights this pen in your pocket. And the Lord is rewriting your story. The Lord is making things new. He's writing something over your life. He's making something new. There's something that is happening in your life even as you are here in the house of God. If you believe, you are going to see the faithful. There is some, I would say some indigestion or something that you have, brother, and it is leaving you right now. There is a healing that is happening right up from the head to the very head. You see the touch of the Lord. Sisters, some pain from your body is leaving. I see your back. I do not know whether you have something, back pain or something, but I see your back, the Lord showed me, and there is a pain, there is something leaving your back. I believe something that is disturbing you, troubling you, is leaving you right now. The deliverance of the Lord, the blessing of the Lord, the favor of the Lord over you and your family. When you go home, you're going to see a different atmosphere. You're going to see a difference in your family. Because the Holy Spirit has taken over. That situation of frustration in your house is disappearing right now as we are prophesying over your life. Hold your hands, all of you hold your hands. Husband and wife, let the blessing of the Lord come into your life at this very moment. That miracle is happening in your life, brother. And the freedom is coming in your life in the name of Jesus. The blessing from head to toe is moving in your life. Stuck up situations are moving in the name of Jesus. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Be joyful, be happy. God loves you and God cares for you and God loves you and your family. Amen. Be लेकिन घर में आशीर्वाद है, लोगों के आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और जैसे आप यहाँ प्रभु के घर में हैं, आप आशीर्वादित होके उस घर में जा रहे हैं, और जैसे आप आशीर्वाद होके अपने घर में जाएंगे, तो अपने आप को घर में आशीर्वाद होगा। Blessing is over you and not the house. The house doesn't need the blessing. You need the blessing. And once you are blessed, wherever you go, the blessing goes with you. You receive the touch of the Lord, the anointing. The Lord is setting you free as you believe. There are a lot of things that are going to shift in your life. बहुत सी चीजें आपके घर, आपके जीवन में शिफ्ट होने वाले, दरवाजे खुलने वाले, बहुत सी चीजें जो अटकी हुई है वो आपको मिलने वाला है।
touch of the Lord. Say, Ora Basha Kalaya. Ila Basha Kalaya. Ora Basha. ये तो बरकत अपने हाथों को खोलिए और प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में बरसने दो इस वक्त। May the Lord bless and bring favor and deliverance in your life and in your family in the name of Jesus. शब बरकत You understand English? The Lord has protected you. The Lord has safeguarded you many times. Just be focused, be relaxed, and allow the presence of the Lord to touch you. Do not be distracted. Do not be found with many people. You know what I am talking about. God has been taking care of you, and God will take care of you in the future because He knows the end from the beginning, and He will set you free and bring you deliverance. Your future is bright in the name of Jesus. So think about, do not be found with little things, but with greater things that the Lord wants to bring into your life. सुनिए, ये कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीजें आप करना चाहते हैं और जो चीजों से आप गुजरे हुए हैं, प्रभु जानता है। वो रफ पीरियड, वो साल जो गुजरा हुआ है, नया साल बहुत भारी था। नया साल वो चीजें आपके नजदीक आ रहे थे और आपको तकलीफ बहुत महसूस हो रही थी। उस साल से आप गुजरकर इस साल में प्रभु ने आपको डाला है, क्योंकि आपके जीवन में और कुछ बरकत, और कुछ आशीर्वाद, और कुछ नया प्रभु करना चाहता है। तो तैयार हो जाइए, पोजीशन हो जाइए वो नई चीजें जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। ये बरकत certain allergies and infections, the Lord is healing you and delivering you in the name of Jesus. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सिस्टर, आपको प्रभु पर ध्यान देना है। प्रभु सब कुछ समेटेगा और प्रभु सब कुछ बरकत लाएगा आपके जीवन पर। ब्लेस 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 ब्लेस। अपने हाथों को खोलिए और बोलिए, प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बरकत ला, आशीर्वाद ला, चमत्कार कर। और जैसे हम अपना विश्वास बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे आशीर्वाद की ओर, हमारे बरकत की ओर, हमारे छुटकारे की ओर, हमारे आजादी की ओर। अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। शब बरकत बरकत बरकत। यीशु आपसे प्यार करता है। सब कुछ प्रभु समेटेगा और सब कुछ संभालेगा। क्या आप समझ पाए जो भी प्रभु बोल रहा था? और प्रभु सब कुछ आगे बढ़ाएगा। तो विश्वास करके आगे बढ़िए। चलिए Open your hands and allow the presence of the Lord to touch you. If it was not for the Lord, things would have been worse. The Lord is in control. The Lord knows everything, and the Lord knows how to put things in place. Things will be in place. Look here, brother. Things will be in place. Things will get in order, and you will move forward. You need to take a decision, and God will help you to take that decision in the right manner, which will work out in your favor, says the Lord. Look up to the Lord. The Lord is in control. I see you're going through something, you're walking through something. The Lord is in control. I also see some finances that are getting released in your life. There is a situation and the Lord is releasing some finances in your life. Something that is stuck up is moving. Some transformations are coming alive and active. There are some burdens and something that you carry on your shoulders, some responsibility. And the Lord will give you the strength to fulfill it. Sister, come here.
touch of the Lord, the presence of the Lord, the glory of the Lord is manifesting into your lives and your bones are being strengthened. Do you get that? Your bones are being strengthened and the Lord is healing you and setting you free. Lift up your hands and put it down. Lift up your hands and put it down. Lift up your hands and put it down. The healing is coming over every fiber, tissue, organ, cell in the name of Jesus. Even last week, you were not well. Last week you were not well. Things were looking very bad in your life. The Lord knows. The Lord knows. The Lord has brought you here for healing and deliverance, and blessing is coming into your life. Does it make sense to you? Does it make sense to you? The Lord is doing that healing in your life. Some pain in your body is leaving. Receive the touch of the Lord. Your glory and confidence, bringing us restoration, recovery, revival, and breakthrough. Brother in the blue, come here, brother. You, come fast. The sister in the green, you also come here, fast. Come. Let's do it fast. Come on. Shut up. Open your hands. English, Hindi. English. Allow the presence of the Lord to touch you, to deliver you, to set you free, because that is what the Lord is doing in your life at this very moment. You're trying to strike on something, but it is not being struck. You're trying to hit it on the right side, but it is not falling in place. God is bringing that order. God is bringing that freedom. God is giving you that wisdom to operate and to move forward, not to look back. Things are trying to pull you back. There's no looking back. You have to move in wisdom. You have to move forward, because God is going to allow you and help you to pick up those stones that is to kill the Goliath. And God will help you. You understand what I'm trying to tell you. I can't go into details, because you know what is the Lord pointing out at this very moment. How to pick up those stones and how to hit at the right side, and how the right solution will come into your life, which you've been looking for more than a year. Today the Lord is bringing you healing. English, Hindi. The Lord is bringing you, open your hand, sister. The Lord is bringing you healing and deliverance. That pain, like a spondylitis that happens towards your back and towards your neck, the Lord is bringing healing in Jesus' mighty name. And freedom is coming into your life. Look here. Sometimes the vision is like partial. The vision is not clear. The Lord is bringing healing in that vision in the name of Jesus. I don't know whether you have a son or you're praying for a young brother. The Lord is going to take care of that situation. And the Lord knows the end from the beginning. Does it make sense to you? The Lord is talking to you right now. You expected help from some people in the family. It has not come. The Lord is your help. Amen. The Lord will give you supernatural help, Amen. which nobody else can give. Amen. There are many people who you thought will be with you, but they are not with you. But that doesn't matter. What matters is God is with you. Amen. God will fight for you, and whatever belongs to you will come to you. Amen. I speak that over your life. Let the confusion leave you. Amen. As you cling to the Lord, the sadness is all to leave you. As you cling to failure is not your portion. Amen. There have been many kinds of failures in your life. Things are not manifesting in your life. The doors are not opening in your life. As you cling to the Lord, Amen. we prophesy over your life. Amen. The Amen. blessing of the life, Amen. the Lord blessing the Amen. work of your hands. Amen. Oh, the Masha, the Amen. Masha, Amen. 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 Say, Jesus, I receive my blessing as I place my trust
in you. Say, Jesus, I believe in you, and I know my life is going to be better as I trust in you. Shama barakata rabaka. Be joyful and go back, brothers and sisters. Go back. Shama barakata rabaka. Amen. Amen. Whatever is your portion, let it come to you. Let find order in your house. Let every blessing be your portion. May your enemies become your footstool. As Lord of Jesus, as you do what God is calling you. May you see the glory of the Lord. Every blessing your portion. The Lord blessing your bread and your wine. The Lord wiping away every tear. And your tears turning into joy. The presence of the Lord is touching you, and the favor of God is locating you. So look up here. The joy of the Lord is your strength, and He's giving you living water, and that freedom is coming into the name, in your life, in the name of Jesus. Receive that freedom, 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 freedom. Amen, 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 amen. प्रभु आपको छू रहा है, कुछ तो आपके जीवन में जो बहुत से कारण से आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो इस वक्त निकल रहा है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु का दाहिना हाथ आपके ऊपर है। तो बहुत से चीजें आपके जीवन में हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आती है, जो आपको तकलीफ देती है, लेकिन आज आप प्रभु के घर में आए, तो बहुत से चीजें आपके जीवन से निकल रही है। प्रभु का पवित्र आत्मा आपको शांति दे रहा है। बहुत से अनबन होते लोगों के साथ, और इस वक्त वो सब प्रभु ठीक कर रहे हैं। आपके वो I will put it like that. There are many people who are against you. बहुत से लोग आपके साथ नहीं हैं, आपके दुश्मन हैं। बहुत से लोग आपके दुश्मन हैं, और वो वैसे लोग हैं जिसको आपने बहुत अच्छी चीज की है, आपने उनके जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत मदद किया है, और लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है। और प्रभु ये सब जानता है, अपने आपका दिल देखा है, और आपके दिल की वजह से प्रभु आपको आशीर्वाद देता है। आज आप प्रभु के घर में आए, आपके साथ नहीं जा रहे। बहुत से बंधन आपके जीवन से टूट रहे, सर में कभी कभी भारीपन होता है, वो निकल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जीवन में। वो सब जो भी आपके मन में आता है वो इस वक्त निकल रहा है। नेगेटिव थॉट्स जो है वो निकल रहा है। का खुशी आपके जीवन में आ रहा है। जॉय ऑफ द लॉर्ड योर स्ट्रेंथ, रिसीव द टच ऑफ द लॉर्ड। आपके जीवन में दो लोग हैं जिसके लिए आप बहुत प्रार्थना करते हैं, आप बहुत सोचते हैं। आज शायद आपके फैमिली मेंबर है जो आप दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, उनका अच्छा हो, उनका भला हो। प्रभु सब कुछ जानता है, आपका हर प्रार्थना का जवाब प्रभु देगा। आप जितना विश्वास करोगे उतना आप प्रभु की महिमा देखोगे। अपने हाथों को खोलिए और जिंदा खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस वक्त आपके जीवन में इंटरफियर कर रहा है, क्योंकि आपके जीवन में उसको बरकत और आशीर्वाद ले आना है। शब बरकत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं, गांव में कुछ तो चीजें हिल नहीं रही है, कुछ तो चीजें हिल नहीं रही है। प्रभु अपने ताकत से उसको हिलाएगा। और आपको बहुत बार लगता है कुछ तो गर्मी हो गई है, कुछ तो तकलीफ हो रही है, और किसने तो कुछ तो किया है। ऐसे चीजों से प्रभु आपको छुटकारा और आजादी और बरकत दे रहा है। शब बरकत। गए साल नवंबर के महीने में बहुत से चीजें आपके ऊपर और आपके परिवार पर ऐसे आ रहे थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर प्रभु ने आपको उस वक्त से गुजारा, और आज अप्रैल का महीना है, आज तक आपको संभाला, आगे भी आपको संभालेगा। उस पर विश्वास रखो, उस पर ध्यान दो। उसका नाम यीशु है। उसके चरणों पर सब कुछ समर्पित करो और आपके जीवन पर कार्य करेगा। शब बरकत कई खानों
पदार्थ बोलते हैं ना, खाना जो खाना खाते हैं, एक कोई खाना का पदार्थ आपको जमता नहीं है, आपको एलर्जी जैसा होता है, या वो खाएंगे तो आपको बराबर डाइजेशन या इशू होता है। प्रभु ऐसे चीजों से, ऐसे तकलीफ से आपको छुटकारा और आजादी दे रहा है। शब्द बरकत 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 क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? आप समझ गए जो भी प्रभु ने बात किया भविष्यवक्ता के द्वारा, क्या ये सच है? सच है। और जैसे ये सच है, मेरा जिंदा खुदा भी सच्चा है, उसके सामने माथा टेककर सब कुछ समर्पित करो। बोलो यीशु मसीह, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों पर समर्पित करती हूँ। हर एक चीज, हर एक बंधन, हर एक संकट मेरे जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दे और मेरे जीवन में आजादी ला। जैसे मैं तुम पर और तेरे भविष्यवक्ता पर विश्वास करती हूँ। शब बरकत 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 खुश होते जाइए। शब बरकत जाइए, शब बरकत